Welcome children. We are discussing the chapter How Do Organisms Reproduce. This is chapter 8 of class 10th science. So in our previous session we have discussed about the male reproductive system in human being. Today we will be discussing the female reproductive system and then the post fertilization events and fertilization. Okay, so let us start our discussion. So let us first discuss the female reproductive system. The female reproductive system, you can see the picture here, and I will explain the different parts of a female reproductive system one by one. Let us see what are the structure included in the female reproductive system. The first one is ovary. So there are two ovaries, and the ovary is an endocrine gland. The ovary produces ova or eggs and female sex hormones called progesterone and estrogen. As you have seen in case of testes is also an endocrine gland because the testes also secretes the male reproductive hormone along with the sperms. So similarly, ovary also secretes progesterone and estrogen hormone, female sex hormones, along with eggs. So in human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. So children, let us see the diagram. So here you can see this is the ovary. So there are two ovaries. They are present in the pelvic region. Below the abdominal region, the pelvic region is present. So they are present in the pelvic region on either side of the uterus. So this is uterus, and on either side of the uterus two ovaries are located, and each ovary that is as you know that in female after attaining sexual maturity, the menstrual cycle takes place, and it takes place for 28 days, and it is a cyclic process because in every 28 days it repeats. So in each month, or you can say during each period, menstrual period, any one of the ovary releases one egg. Okay, suppose say this month left ovary will release the egg, then next month the right ovary may release the egg, or the left ovary may release the egg. So हर महीने जब menstrual cycle होता है तब कोई एक ओवरी एक ही एग रिलीज करता है. ठीक है. So now let us see what is next part. The next part is fallopian tube. Next part is fallopian tube. So, or they are also known as oviduct. They are the tubes that carry the ovum released by the ovary to the uterus. Okay. So let us see the diagram. So here you can see children, this is ovary. Then you can see there are tube-like structures. The two ducts are there on either side. So this is called fallopian tube or oviduct. Okay, the fallopian tube has a funnel-like structure that is called infundibulum, and infundibulum has finger-like projections you can see, and these finger-like projections are called fimbriae. So when the egg is released from the ovary, immediately it is captured by the fimbriae, and then the egg passes through the oviduct. Actually, the oviduct has three parts. The first one is infundibulum. Okay, so these are not there in your syllabus. It is in class 12th, but still then I want to tell you. Then the first part is infundibulum, then the middle part is ampulla, and the last part is isthmus. Okay, so the egg is released from the ovary, that is taken by the infundibulum,
up to the ampulla, and in the meanwhile if the sperm reaches the oviduct, अगर स्पर्म यहाँ तक पहुँच जाता है तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है. ठीक है. सो again I am repeating children, see there are three parts in the oviduct. The first part is infundibulum. This is infundibulum. So the infundibulum captures the egg released from the ovary. Then the egg is carried to the ampulla, middle portion of the oviduct. And in the meanwhile, if the sperm reaches up to the oviduct, then the fertilization takes place here. Okay. Next, ovulation is the process of release of egg by the ovary. Okay. So during menstrual cycle, as I have said you that one of the ovary releases one egg. So that release of egg, that process of releasing egg is called ovulation. The next part is uterus. Uterus is the organ where the zygote implants and matures till it is ready to be born. The embryo grows and develops inside the uterus, which is also called the womb. Let us see the picture. So here children, so from both the side, the oviduct has opened into a sac-like structure. Here you can see this is a sac-like pear-shaped structure. This is called uterus. This is called uterus. Okay. So this uterus is the part where the embryo is implanted. After fertilization, the zygote is formed. Then the zygote moves towards the uterus, and in the uterus there is a lining, inner lining called endometrium, and the endometrium is ready to carry the embryo. So if fertilization takes place, then the zygote moves towards the uterus, and in the uterus the zygote now becomes the embryo, and embryo is implanted in the endometrium. Okay. And remember children, the uterus is also known as womb. The next part is cervix. Cervix is a narrow lower end of the uterus, which is followed by vagina. Vagina is a tubular, long, fibromuscular canal lined with mucous membrane. Okay. So here you can see in this picture. Let me show you. So here you can see this portion is uterus. This portion is uterus. Then you can see here a narrow canal is present. This is cervix. Okay. Then the cervix is opened into a bit wider duct that is called vagina. So the cervix and vagina together constitute the birth canal. They together constitute the birth canal. Okay. Because after the embryo is fully developed into fetus, then the fetus or the fully grown baby is delivered through this pathway or through this canal. So it is called birth canal. Okay. So now it is the receptacle for the penis during sexual intercourse and the passageway for the childbirth. तो ये जो है बच्चों that vagina, it is the region where the penis releases the sperm. In the vagina, the penis releases the sperm. So it is the receptacle for penis. Okay. So let us see what are the parts and what are their function. So just at a glance, ovary produces egg, and it also produces the estrogen and progesterone hormone. Then fallopian tube, they catches the egg from the ovary and transport it to the uterus. And in the fallopian tube, fertilization also takes place. Then uterus
It is the site of implantation of the embryo. Okay, so the developing embryo is implanted in the endometrium, and the endometrium is the inner lining of the uterus, which is enriched with blood vessels, and it nourishes the embryo. And after implantation, the endometrium also forms the placenta. Okay, then the next part is vagina. It allows the entry of sperm and exit of baby at the time of birth. Actually, the cervix and vagina both together known as the birth canal, and their function is same. Okay, now let us see what is the structure of egg or ovum. The ovum is much larger than the motile sperm. हमने जो स्पर्म के बारे में डिस्कस किया था मेल में, तो स्पर्म का साइज़ बहुत ही छोटा होता है एज़ कंपेयर टू द एग. आप यहाँ देख सकते हो, ये जो येलो कलर स्ट्रक्चर है विथ ऑरेंज सेंटर, सो ये है एग, और इसके चारों तरफ आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर द स्पर्म्स. सो फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन इमेजिन कि हाउ स्मॉल द स्पर्म्स आर एज़ कंपेयर टू द एग. एग के साथ अगर कंपेयर करेंगे कितने छोटे होते हैं ये. ठीक है, देन नाउ दिस एग्स आर रिलीज्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड द एग मूव्स towards the uterus, but in the midway, that means in the ampulla, if the sperm reaches the ampulla, then the fertilization takes place. So what is fertilization? The process of fusion of male and female gamete is called fertilization. When the sperms are released into the female reproductive tract, they travel and reach the oviduct, where sperm may come in contact with egg, and one of them may fuse with the egg, and fertilization occurs. So let us see again this diagram. As I have told you that if after the egg reaches the ampulla, in the meanwhile, suppose that sperm is taken up to this, and here fertilization takes place, but only a single sperm will not reach up to the egg. As you can see in this diagram, there are so many sperms entangled to the egg, but out of these sperms, only one sperm will penetrate into the egg, and that will fuse with the egg. Okay, so only one sperm will fuse with the egg. Okay, now let us discuss the steps of fertilization. The sperm is released into the female reproductive tract. First event, how it is released, that you know, through the penis. Then the sperm travel towards the oviduct and may come in contact with the egg. Okay, so it is not mandatory that a particular sperm will come in contact with the egg. The sperm may come in contact with the egg, may not come in contact with the egg. The sperm's acrosomal enzyme digests the egg jelly. So children, here egg is there, suppose say, and you know that the sperm head, this is, okay, so this is suppose a sperm head, and in the sperm head I have told you that there is a part known as acrosome, and in this acrosome the digestive enzyme is present which digests the covering of the egg. Okay, so now what happens, after digesting the covering of the egg, the plasma membrane of the sperm and egg fuse, then the nucleus from the sperm is released into the egg, then egg nucleus and the sperm nucleus fuse with one another, and now the sperm, after releasing the nucleus into the egg, it detaches, ये यहाँ से separate हो जाता है. ठीक है, सिर्फ ये अपना जो head portion है, only head portion enters into the egg and rest of the portion remains outside. So here you can see how the fertilization takes place.
So here children, you can see the diagram. You can see that from the ovary the egg has reached this region. Okay, so this is the egg where the fertilization has already been taken place, and this is how the fertilization is taking place. Okay, so the whole process of fertilization is shown here. आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों. So here binding of the sperm to the egg membrane. This yellow membrane is the egg membrane. Okay, तो ये egg membrane के साथ स्पर्म बाइंड होता है पहले. उसके बाद आप देख सकते हो कि एग का जो हेड है, आई एम सॉरी, स्पर्म का जो हेड है किस तरह धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है एग के मेम्ब्रेन के अंदर. सो हाउ इट इज़ पेनिट्रेटिंग, बिकॉज इट इज़ हैविंग द एंजाइम इन द एक्रोजोम, सो इट पेनिट्रेट्स इनटू द एग मेम्ब्रेन. देन यहाँ पर आप देख सकते हो एग मेम्ब्रेन को पूरी तरह वो डाइजेस्ट कर दिया है, एंड नाउ इट हैज़ रिलीज्ड इट्स न्यूक्लियस. अभी इसने अपना न्यूक्लियस को रिलीज़ कर दिया. ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चों, ये तो था हमारा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एंड हाउ द स्पर्म रीचेस अप टू द ओविडक्ट एंड हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. नाउ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. Human reproduction, as you know that it is sexual reproduction, so it starts with gamete formation, and the gamete formation starts at puberty. But one thing children remember, the production of egg or the release of egg, these two things are different thing. Okay, so when a female baby takes birth, at the time of its birth, its ovary is having thousands of, near about 60,000 immature eggs are there. But they are immature eggs. That means the production of egg has been started when the female child was inside the womb of the mother. मदर का womb में जब होता है तब से ही उसका एग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, लेकिन वो इमेच्योर होता है. ठीक है, बट व्हेन इट रीचेस प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी तक रीच करता है तब ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ द हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, the ovary attains maturity and the egg also gradually becomes mature one by one. धीरे धीरे एक के बाद एग मैच्योर होने लगते हैं. लेकिन ये जो गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस फीमेल में कब शुरू होता है बच्चों? when the baby is inside the mother's womb. But in case of male it is quite different. मेल में स्पर्म प्रोडक्शन इनसाइड द वूम शुरू नहीं होता. मेल में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी ओनली. जब टेस्टिस मैच्योर होता है तभी स्पर्म प्रोडक्शन भी होता है और रिलीज भी होता है. लेकिन एग का प्रोडक्शन, एग का बनना शुरू हो जाता है मदर के वूम में, लेकिन ये मैच्योर होता है और रिलीज होता है एट प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड. ओके, सो दिस इज हाउ द गैमेट आर फॉर्म्ड and when the gametes are formed. Now the first step is your fertilization, the events, major events I am talking about. So as I have told you that fusion of sperm and ovum results in the formation of zygote. Then zygote is one cell stage, as you know, एक ही सेल होता है, and the zygote travels towards the uterus as I have shown you in the picture. Then the zygote becomes embryo. What happens children? The zygote starts dividing. Okay, as it moves towards the uterus. जैसे जैसे ये यूट्रस की तरफ मूव करता है तो ये धीरे धीरे डिवाइड करने लगता है. पहले 2 सेल, फिर 8 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल ऐसे बनता जाता है. तो जब ये 16 to 32 सेल का बन जाता है तब हम उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट.
ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट. सो 16 to 32 सेल्ड स्टेज में ये इम्प्लांटेशन होता है. ठीक है, इट गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस. यूटरस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है और धीरे धीरे ये डेवलप होता है किसमें, फीटस में. सो द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड, लेग, ब्रेन, हार्ट, एवरीथिंग gradually develops and that embryo becomes the fetus. Now after the fetus is fully developed, the baby is formed and the baby is born when development of the fetus is complete. Okay, now let us see the whole process of reproduction in human being. So you can see children here, the specialized cells are there in the ovary and the testes and they produce the gamete by meiosis. meiosis के द्वारा वो gamete बनाते हैं. the male produces the sperm, the female produces the egg and both of them fuse together. that fusion is known as fertilization. then zygote is formed and zygote undergoes mitosis, or you can say that process of mitosis is called cleavage. जाइगोट में जो कंटिन्यूस डिवीजन होता है जिसके द्वारा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है उसको कहा जाता है क्लीवेज. एंड नाउ दैट जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज टू फॉर्म एम्ब्रियो, देन द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू fetus. So here the process of fertilization I have shown you once again children. Fertilization is internal in human being. It takes place in the female reproductive system and it takes place in the fallopian tube and the unfertilized egg remains alive for approximately 24 hours. एग का लाइफ स्पैन कितना होता है बच्चों, 24 hours. ओके, सो द स्पर्म्स एंटर्स थ्रू द वाजाइना एंड रीचेस द fallopian tube and sperm must fertilize the egg within the above time. 24 hour के अंदर अगर उसने स्पर्म अगर एग को फर्टिलाइज कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज द एग विल डाई. ओके, सो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ देखो बच्चों, दिस इज द रियल पिक्चर. आप देख सकते हो ये है एग और यहाँ देखो कैसे रेस लगा रहे हैं सारे स्पर्म एग तक पहुँचने के लिए. लेकिन जो स्पर्म पहले पहुँचता है और पहले एग को पेनिट्रेट करके फ्यूज हो जाता है वही जाइगोट बनाता है, वही फर्टिलाइज होता है. सो आफ्टर दैट इट फॉर्म्स जाइगोट. जाइगोट के बाद ये देखो बच्चों, ये जो लाइनिंग है दिस इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. और जब तक ये यूट्रस तक पहुंचता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर देयर इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल और इसमें 16 to 32 सेल होते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. और ये धीरे धीरे किस तरह इम्प्लांट हो रहा है यूट्राइन वॉल में आप देख सकते हैं. ओके, सो now zygote formation already we have discussed, which is a single cell. Now the zygote develops into the embryo by continuous mitotic division and the embryo is implanted. So during this process, during the menstrual cycle, the uterus prepares itself to receive the embryo. उसका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है वो ठीक होता जाता है. और याद रखो बच्चों, एम्ब्रियो डिसेंड्स इनटू यूटेरस इन 4 to 5 days फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने के बाद 4 to 5 days के बाद वो यूट्रस तक पहुंच जाता है एंड 7th day में वो आकर इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में. और यूटेरस में इम्प्लांट हो जाने के बाद मदर के बॉडी का जो एंडोमेट्रियम है और जो एम्ब्रियो का सेल है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, एंड ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है किससे, बाय द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एज वेल एज द एम्ब्रियोनिक टिश्यू. ठीक है, एंड दिस अम्बिलिकल कॉर्ड
is connected to the uterine wall of mother through placenta. और placenta क्या है बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हो. Placenta is a structure formed by specialized tissue of fetus and uterine wall of mother. uterine wall मतलब endometrium. एंडोमेट्रियम एंड फीटस का टिश्यू मिलकर प्लासेंटा बनता है. और ये प्लासेंटा का काम क्या है बच्चों, इसका काम है एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स, यानी मदर के बॉडी से न्यूट्रिएंट जाएगा, एंटीबॉडीज जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, ये सारे जितने सारे नेसेसरी थिंग्स विल एंटर इनटू द फीटस. और फीटस से क्या आएगा, फीटस से एक्सक्रीटरी मटेरियल आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सचेंज्ड थ्रू द प्लासेंटा. एंड बिसाइड्स दैट द प्लासेंटा ऑल्सो सीक्रेट्स सर्टन हार्मोन्स व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. ओके, सो यहाँ डायग्राम में हम आपको पूरा जो अप टू इम्प्लांटेशन सारा इवेंट हम आपको दिखा रहे हैं. देखो बच्चों, ये एक ओवारी है. इस ओवारी में आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे एग है, और ये एग डिफरेंट स्टेज में, कुछ इमैच्योर एग है यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ आप देख सकते हैं ये मैच्योर एग है. ठीक है, ये मैच्योर एग है, और यहाँ मैच्योर एग रिलीज़ हुआ है, और रिलीज़ होकर एग पहुँचा अम्पुला तक ओविडक्ट का, और वहीं पर स्पर्म पहुँचा है आकर, और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया. अभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया. अभी जाइगोट धीरे धीरे वो डिवाइड करने लगेगा. जो देख सकते हो आप यहाँ पिक्चर में कि ये धीरे धीरे किस तरह इट इज़ डिसेंडिंग डाउन इनटू द यूटेरस. और जैसे जैसे ये यूटेरस की तरफ आता है तो इस यहाँ पर हाईलाइट किया गया है उसका पिक्चर. तो पहले 2 सेल, फिर 4 सेल स्ट्रक्चर, देन 8 सेल्स, 32 सेल स्ट्रक्चर. जब ये 32 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है तब उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और ये आकर यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है. ठीक है, अभी हम देखेंगे प्लासेंटा. हमने जो बताया था, प्लासेंटा इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द मदर. सो इट इज़ ए डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल. देखो बच्चों, ये प्लासेंटा कोई सिर्फ एक लाइक इट इज़ नॉट ए ट्यूब, ये एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है. ओके, एंड इट कंटेन्स villi ऑन द एम्ब्रियो साइड. ये देखो, ये अंदर की तरफ बच्चे के तरफ जो देखो यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड है. अब इसको मिटा के मैं दिखा रही हूँ आपको. देखो ये जो है बच्चों, ये बच्चे से निकला हुआ है, दिस इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड. ठीक है, और ये मदर का यूटेरस है. ठीक है, सो यूटेरस के साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड जॉइन होकर प्लासेंटा बनाता है. एंड प्लासेंटा प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो, एंड इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स and wastes between the mother and the fetus. The placenta also produces several hormones to maintain pregnancy that I have already told you. So these are the events takes place if the fertilization takes place. Suppose say fertilization does not occur. Again and again I am telling you children, fertilization is a matter of chance. ज़रूरी नहीं है कि जब एग रिलीज़ हुआ उसी टाइम में ही इंटरकोर्स होगा और उसी टाइम में ही स्पर्म जाकर ओवम तक पहुंच जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ ए मैटर ऑफ चांस. सो इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है? नो प्रेगनेंसी अकर्स. द अनफर्टिलाइज्ड ओवम डाइज विद इन 24 आवर्स बिकॉज इट्स लाइफ स्पैन इज 24 आवर्स. देन आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम, ओवम रिलीज होने के बाद आपका एक स्ट्रक्चर बनता है बच्चों ओवारी के अंदर, जिसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम. अभी ये कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन होता तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता, लेकिन अभी जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड यूटेरस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग था वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. ठीक है,
सो दैट मेंस्ट्रुएशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे बच्चों. सो एन एग इज रिलीज फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरीज इन एवरी 28 days विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड अनफर्टिलाइज्ड एग का लाइफ कितना होता है बच्चों? 24 hours ओनली आफ्टर ओवुलेशन. एंड ओवुलेशन तक यूट्रस खुद को तैयार कर लेता है टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो. लेकिन if fertilization does not take place, then no zygote is formed, so the endometrium breaks, which results in bleeding through vagina. Okay, and this is called menstruation. और ये bleeding कब तक होता है? 2 to 6 days तक bleeding होता है. and ये कब होता है बच्चों menstruation? approximately 14 days after ovulation. एग ओवरी से रिलीज होने के 14 days के बाद मेंस्ट्रुएशन होता है. सो 28 days में, एवरी 28 days में एक बार मेंस्ट्रुएशन होता है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है. ठीक है. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब लाइफ स्टेज मीन्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च एंड द एंड ऑफ द menstrual cycle is called menopause, which takes place at around 45 to 55 age. Okay, so children, with this our male and female reproductive system along with the whole process of sexual reproduction in human being is over. So in our next session we will be discussing reproductive health. Okay, till then, bye bye. Thank you very much for watching.